Welcome back, everyone. Yesterday, if you remember, first of all, good afternoon. How are you all? Let's start. Yesterday, if you remember, we were doing this part question based on equations reducible to quadratic. So let's continue with that. Let's continue with that. Yeah. So first of all, this is the next question. After this, we will be going to let me tell you what we are going to do in this lecture. There are one or two questions here, equation reducible to quadratic. After this, we'll be doing, as I told you yesterday also, the what we'll be doing, the graph of quadratic equations, and second, the location of roots. Now, let me tell you something about these two topics. The location of roots mainly concept will not be asked exclusively from quadratic. What do I mean is that location of roots will be a part of some other chapter. That means there will be questions on some application of derivatives, and then inside that we might have to use location of roots. Direct question on location of roots is not expected. As I told you yesterday, for JEE means the most important part in quadratic equation is only sum of the roots and product of the roots. Majority times they ask questions from that. So location of roots, a direct question you cannot or you may not expect it. It will be in indirect form, depending on or connecting to some other chapter. Let's look at this question first. So here, obviously by looking at you will not see कि हाँ ये quadratic equation है, but हम लोग इसको quadratic equation बना सकते हैं. How? By let us substitute under root of x upon x minus 3 as t. So what the equation will become? It will be t plus 1 by t is equals to 5 by 2. So if I take LCM, I'll get t square plus 1 by t is equals to 5 by 2. Let's cross multiply. So the equation I'll get will be 2t square plus 2 and minus 5t will be equals to 0. What are the factors here? Factors are very simple. 2 to the 4. So 4 ones are 4. So 2t square minus 4t minus t plus 2 equals to 0. Let's take 2t common. What I'll get? I get t minus 2 minus 1 into t minus 2 equals to 0. So that means t minus 2 into 2t minus 1 equals to 0. That means we got t equals to 2 and t equals to half. Let us resubstitute the values. So I'll get under root of x upon x minus 3 equals to 2. या फिर under root of x upon x minus 3 equals to half. So to solve or to get values of x, let's square on both sides. So I'll get x upon x minus 3 equals to 4. If I cross multiply, I get x equals to 4x minus 12. That means 3x equals to 12 and one of the values x equals to 4. If I square here, I'll get x upon x minus 3 is equals to 1 upon 4. Let us cross multiply. So 4x equals to x minus 3. So 3x equals to minus 3 and x equals to minus 1. These are two values of x. Let's look at to the next question. I hope it is clear. Okay. Chalo. Next one. Yeah. Solve. This is a very good question. You can mark it as, because by seeing it does not look quadratic, it is bi-quadratic, like the power is 4. But by some algebraic manipulation I can easily convert into quadratic by substituting. Now what algebraic manipulation I am talking about? See, I am saying let's divide throughout by x square. So I'll get 2x square plus x minus 11 plus 1 by x plus 2 by x square equals to 0. Let's group some terms together. I am grouping this and this. So I can take 2 common. I'll get x square plus 1 by x square. And I'll group the x terms plus x plus 1 by x
and minus 11 equals to 0. Now, this x plus 1 by x square, by using algebraic identities, I can write x plus 1 by x the whole square minus 2 plus x plus 1 by x minus 11 equals to 0. Now you can see the substitution what we are going to use. We are going to use let x plus 1 by x be t. So my equation will now become 2 into t square minus 2 plus t minus 11 equals to 0. So I'll get 2t square plus t minus 4 minus 11 minus 15 equals to 0. Correct? Yeah. So what are the factors now? 15 to the 30. 6 5 are 30, right? So 2t square plus 60 minus 5t minus 15 equals to 0. Let's take 2t common. I'll get t plus 3. Here I can take minus 5 common. Same I'll get t plus 3 equals to 0. So after taking 3t plus 3 as common, I'll get 2t minus 5 equals to 0. So I got two values of t. First is minus 3 and second is 5 by 2. So let us resubstitute the value. T was x plus 1 by x is equals to minus 3. So if I take LCM here, what I'll get? X square plus 3x, right? X square plus 3x plus 1 equals to 0. And if I substitute it here, so I'll get x plus 1 by x is equals to 5 by 2. That means 2x square minus 5x plus 2 equals to 0. So basically I got two quadratic again. So instead what? I need to solve these also now. Got it? So let's solve. What I'll get is factors. First वाले के factors है क्या? I don't think first वाले के factors है. So we have to use the same formula minus b plus minus. So minus 3 plus minus under root of 9 minus 4 upon 2. या फिर x equals to इसके factors है हाँ 4 1 जा 4 इसके तो factors है. So we can factorize this one. What I'll get is अच्छा पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. ये तो वैल्यू आ गई ना. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2. दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज. सेकंड में इसको फैक्टराइज करेंगे. सो 2x स्क्वायर 4 ना 4 1 जा 4 तो माइनस 4x minus 1x plus 2 equals to 0. So I can take 2x common. I'll get x minus 2 minus 1 common. X minus 2 equals to 0. So that means x minus 2 into 2x minus 1 equals to 0. So total I got 4 values of x. All of them are in box. These two values and these two values. Got it? So many a times the equation which looks somewhat ganda equation, you can say, ki not quadratic. We can convert it into quadratic by some algebraic manipulation and then using substitution. So these are the questions I wanted to discuss. And now let's move on to the next part. What we are going to do now, we are going to do two things. That is graph of quadratic equation and location of root. So first, let us go to the graphs here. So as you all know, how does graph of quadratic equation looks like? Graph basically looks like a parabola shaped U. And there are two cases. Either the parabola can be U or the ulta U. That depends on the leading coefficients. Leading coefficients mean coefficient of x square. यहाँ पे x square का coefficient is a. Got it? So the coefficient of x square is a. If a is greater than 0, the shape of the graph is
u. Now, nature of roots may we had three conditions. So that is the first condition is a greater than 0, so we saw delta greater than 0. That means discriminant greater than 0. Discriminant greater than 0 means the quadratic equation will have, and if quadratic equation has two roots, that means it has to cut x-axis two times. So graph can be any of the possible. So like if it can be on the right side, it can be between, or it can be on the left side. But it has to cut the x-axis at 2 points. Now, what was the second nature of root? Delta equals to 0. If discriminant equals to 0, then we get equal roots. Equal roots in mathematically, we can say only one root we got. One root repeated twice, right? So if only one root we got, geometrically that means the graph will cut x-axis only at 1 point. Now, how is this possible? The graph will look like this. If delta equals to 0, the graph will look like this. That is, graph touches x-axis at 1 point. Achha, one more thing I need to add here. The function f of x, which is the quadratic equation ax square plus bx plus c, will always lie above y-axis or it will touch y-axis. That means this will always be greater than or equals to 0. This is important because questions में directly नहीं दिया होगा, question में ये condition दी होगी. So you must know. So what is the condition for this? कि f of x will be greater than or equals to 0. बराबर ना, क्योंकि ग्राफ हमेशा y के ऊपर है या तो टच करना. Now the last one is less than 0. Delta less than 0. What does delta less than 0 means? Delta less than 0 means no roots or imaginary roots. So no roots means the graph will never cut x-axis. If the graph will never cut x-axis, it will be above x-axis. So this will look like this. And if it is above x-axis, then f of x, which is the quadratic expression ax square plus bx plus c, will be greater than 0, not equal to. Equal to के case में touching होता है. So it will be greater than 0. Got it? So these two conditions are important. Why? Because this will be given in question. Now, let's look at what is leading coefficient is less than 0. Till now, we have been seeing a greater than 0. A less than 0 में क्या खाली u उल्टा हो जाएगा. So the conditions will remain the same. Delta greater than 0 equal to 0 less than 0. So in case 2, which is a less than 0, the graph will be ulta u. The first delta greater than 0 means it will cut x-axis at 2 points. You can see here 0.1, 0.2. Then again same cheese equal to 0 means touch. अभी यहाँ पे condition क्या होगा? The f of x, which is my quadratic expression, ax square plus bx plus c, will be less than equal to 0. क्यों? क्योंकि y axis, sorry, x axis हमेशा नीचे है. Means हमेशा negative रहेगा. 0 भी होगा because it is touching. And lastly, this one, this means no roots. No roots means it will not cut x-axis. That means f of x will be less than 0. So these are 6 cases. Let me tell you case 1. Case 1 में अपने पास 3 सब केस थे depending on delta. Case 1 में a greater than 0, delta greater than equal to less than. Case 2 में a less than 0, delta greater than equal to less than. So in total, we have 6 graphs depending on different conditions. So let's look at the question now, how questions comes, because ultimately the question is solve करना पता होना चाहिए ना. चलो, this one. Yeah. If it is a very good question, it is given ax square plus bx plus c is equals to 0. A, B, C has no real roots. That means this quadratic has no real roots. That means the roots are imaginary. That means
That means key either the graph will always be above x-axis because the roots are imaginary, it will never cut x-axis, or if it will be like this. This is possible when a is greater than 0. This is possible when a is less than 0. So you have to keep this in mind. Now, it is given c is less than 0. What does it mean if c is less than 0? See, let's look at f of x. This is a previous JEE question, very interesting question. F of x is ax square plus bx plus c. Now, what is f of 0? F of 0 is c, and it is given that c is less than 0. That means f of 0 is less than 0. And we can say if one of the value is less than 0, that means which case it is? Which case it is? It is second case. Why second case? Because when we put x equal to 0, we got negative value. That means the graph lies below x-axis. And if the graph lies below x-axis, then a is less than 0. And if a is less than 0, what is my option? It is option A. Option D गायब हो गया. तीन ही option है. ठीक है. It is option A. I hope you got it. Got it? Let me repeat once more. X को 0 रखा तो फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आए. फंक्शनल नेगेटिव मीन्स एक्स इसके नीचे ग्राफ है, एंड अगर एक्स इसके नीचे ग्राफ है तो ये केस तो हो नहीं सकता है. इट इज दिस केस. That means a is less than 0. That means option A. Let's look at the next question. The graph of the function, it is a quadratic, is strictly above the x-axis. The graph is strictly above x-axis. You can see this value, which is a, that is greater than 0. Why? Because it is 16. 16 greater than 0. So that means graph of this will look like this. This is basically x-axis. Huh? And if the graph is looking like this means that discriminant is less than 0. क्यों? ग्राफ x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है. अगर ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, that means रूट्स आर इमेजिनरी. और रूट्स इमेजिनरी का कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट less than 0. So let's find discriminant b square ना. So ये रहा b, इसका स्क्वायर. So I'll get 64 into a plus pi the whole square minus 4. a तो 16 है और c है minus 7a minus 5 will be less than 0. 16 4 the 64 cancel, minus minus plus हो जाएगा. So if I open the bracket, I'll get a square plus 10a plus 25 plus 7a plus 5 less than 0. So let's rearrange. I'll get a square 10 plus 7 plus 17a plus 30 less than 0. Factors are 15 twos are 30, right? So a plus 15 into a 15 twos are plus 2 less than 0. So if we do wavy curve, less than 0 वाला चाहिए. So this is minus 15. This is minus 2. wavy curve में सॉरी wavy curve में less than 0 वाला एरिया कौन सा आया? This one. This one means a lies between minus 15 and minus 2. What is the option? First one. It is option A. Got it? So such questions appear in JEE means basically discriminant पे condition रहेगा और strictly above. इसके लिए मैंने वो दो condition लिखा था, f of x greater than 0 and f of x less than 0. Let's look at the next question. Again a good question. If the equation has non-real roots, again
non-real roots. What does it mean by non-real? Same. क्या? Discriminant will be less than 0. That means discriminant is less than 0. So what will be the discriminant? B square. 4b square minus 4a minus 3c less than 0. We have to find c, right? So 4 तो cancel हो जाएगा, common आके I'll get b square plus 3a is than 0. Right ना? इसके बाद वो लोग ने कंडीशन दिया है. Let's look at this condition. So if we cross multiply, I'll get 3c less than 4a plus 4b. सबको राइट में लाओ. तो 4a plus 4b minus 3c is greater than 0. Now, please understand this. हम लोग का जो एक्सप्रेशन था that was f of x, which is ax square plus 2bx minus 3c. अब यहाँ पे if मैं f of 2 फाइंड करूँ, सी f of 2 क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ मिलेगा अपने को. क्या मिलेगा पता है? 4a plus 4b minus 3c. See, this looks exactly as this. f of 2. Got it? और अगर f of 2 ये दिया है which is greater than 0, कहां से? From 1. f of 2 is greater than 0. अभी ग्राफ की पॉसिबिलिटी क्या क्या थी? ए की तो वैल्यू पता नहीं है एंड नॉन जीरो रूट्स है. सो सेम ग्राफ या तो ऐसे होगा और ऐसे होगा. ये कभी पॉसिबल है ए ग्रेटर देन 0, ये कभी पॉसिबल है ए लेस देन 0. फर्स्ट हम किया था ना, ऐसा ही है. एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब एक्स की जगह पे 2 रखा तो ग्राफ ऊपर मिला है. एंड इफ ग्राफ ऊपर मिला है दैट मीन्स ये वाला केस है मेरा, वाई एक्सेस के ऊपर है, पॉजिटिव. दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0. लेट्स कम हियर. A is positive, B square is positive, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी लेस देन 0 आ सकता नहीं है. पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आ सकता है. तो नेगेटिव होने के लिए C को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव. दैट मीन्स C is less than 0. C is less than 0. That means option first. Very, very logical if you remember the graph. Got it? I'll give you 30 seconds to look again because it was a good question, and then we'll proceed on to the next one. So, please look or take 30 seconds and look at this question. And chalo, let's look at next. Yeah. See, the integer k for with the inequality. अच्छा, फर्स्ट तो हम लोग यही करते हैं ना हर टाइम. इसको क्या देते हैं? एक एक्सप्रेशन मान लो f of x. एक्सप्रेशन क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k माइनस 1 x प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 0 दिया है, राइट? सो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ज्यादा है. So do you remember this condition? Which condition? This one. ये हम लोगों ने लिखा था f of x is greater than 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव. सी 1 है ना, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव. सो ग्राफ कौन सा पॉसिबल है? ये वाला, क्योंकि f of x हमेशा x एक्सिस के ऊपर है. सो दिस ग्राफ इज पॉसिबल. And this graph is possible, that means discriminant is less than 0. क्योंकि रूट्स ही नहीं है उसके, कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को. तो इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इजी, खत्म, क्वेश्चन इज ओवर.
इंटीजर वैल्यू ऑफ के, ओके, सो बी स्क्वायर, यही है ना, तो बी स्क्वायर विल बी 4 into 3k minus 1 the whole square minus 4 a 1 है, c क्या है, 8k square minus 7 is less than 0, ये है ना c, okay, you can cancel out 4, bracket of a plus b the whole square, a square minus 2ab plus b square minus 7 less than 0. Let's simplify. So k square minus 6k plus 8 less than 0. 8 चाहिए ना? What are the factors? 4 to the 8. So k minus 4 and k minus 2 is less than 0. Let's plot the critical points. Less than चाहिए मतलब ये वाला area. That means k belongs to 2 to 4. मुझे क्या फाइंड करना है? इंटीजर के. सो 2 और 4 के बीच में इंटीजर क्या आता है? 3. दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3. ऑप्शन ए. दिस इज माय आंसर. सिंपल. k की वैल्यू क्या आ गई? 3. So these question I personally very much like these two topics. लोकेशन ऑफ रूट्स, बिकॉज वो बहुत ही लॉजिकल होता है. लाइक टू जस्ट हैव टू नो कि हाँ ग्राफ कैसे बनेगा एंड लॉजिकली अप्लाई द कंडीशन. जैसे यहाँ पे दिस वाज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा ऊपर है, और हमेशा ऊपर है तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. सिंपल. So it is very logical. Personally, in all of quadratic, I like this part very much. It is very logical. Chalo, got it? Now, the last topic of quadratic, what we are going to do is location of roots. So you all know what is meant by location of roots. Quadratic इनके roots होते हैं maximum 2. So वो 2 roots कहाँ पे है? Like x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है? पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या 3 से बड़ा है रूट, या 5 से कम है रूट. गॉट इट? ये सब कंडीशन मुझे दी होगी और मुझे फाइंड करना होगा क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स, की रूट्स कहाँ पे है. गॉट इट? सो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ना, रूट्स कहाँ पे है. मैंने ही बहुत सारी बोल दी. कौन सी बोली? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3 तो ऐसे हो गए. 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, या फिर 3 और 4 के बीच में, 8 और 9 के बीच में. तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. बट इन जनरल, मोटे मोटे तौर पे, जस्ट फॉर रेफरेंस, वी हैव डिवाइडेड इनटू 9 केसेस. नाउ आई डोंट रिकमेंड कि ये 9 केस आप लोग लर्न करो या फिर जो रट्टा मारो. जस्ट ट्राई टू गेट इट लॉजिकली कि हाँ रूट्स दोनों पॉजिटिव कब होंगे? जब भी दोनों 0 से बड़े हैं. That way you can think. So let's look at the next question. Let's look at location of roots. This is case 1. तो मैंने बोला case 1 क्या है? Both roots are positive. So how will the graph look like? Obviously we will only consider one of the cases. हर बार a less than 0, a greater than 0 के लिए दो केस में नहीं कर रहा हूँ. We will always consider a greater than 0, less than 0 के लिए भी सेम ही हो. So कौन से ग्राफ पॉसिबल है पहले देखो. ये दोनों रूट, कैन यू सी दिस रूट्स? या दीज आर द रूट्स अल्फा बीटा. दोनों देखो ये 0 से बड़े हैं. ऐसा भी ग्राफ हो सकता है. क्यों? क्योंकि दोनों रूट कोइंसिडेंट है बट 0 से तो बड़ा है. Got it? So what are the conditions? We all know that this point, the midpoint or the vertex, parabola का vertex बोलते हैं, होता है minus b by 2a. So यहाँ पे obviously discriminant क्या होगा? या तो 2 रूट है या तो 1 रूट है. तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, 2 तो कांस्टेंट है ना. सो माइनस बी बाई से क्या आता है? सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए. तो हम लोग माइनस बी बाई 2a में 2 कांस्टेंट है, उसकी इतनी हटा देते उसको. 2 खाली क्या करेगा? वैल्यू कम करेगा ना, बट पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा. 4 का हाफ 2 हो जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सम ऑफ द रूट्स विल बी ग्रेटर देन 0. क्यों? ये पॉइंट देखो ना,
0 से बड़ा है। एंड नेक्स्ट ए एफ ऑफ 0, ए मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट एंड एफ ऑफ 0, ये देखो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 एक्चुअली ग्राफ ऐसा इधर कट करेगा ना ऊपर जाके, दिस इज ऑल्सो अबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. सो वी हैव बेसिकली थ्री कंडीशंस टू कंस्ट्रेन द ग्राफ. वो तीन कंडीशन कौन सी है? एक डिस्क्रिमिनेंट की, एक वर्टेक्स की, और एक फंक्शनल वैल्यू की. लेट मी रिपीट माई सेल्फ. तीन कंडीशन कौन सी है? डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, फंक्शनल वैल्यू. If we adjust these three conditions, then we can constrain the graph according to this given. Given क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए भाई. पॉजिटिव होने के लिए हम लोग को थ्री तो कंस्ट्रेंट ऐसे लगा. लेट्स लुक एट सेकंड. वो रूट्स आर नेगेटिव. तो पहले तो क्या करना है अपने को? ग्राफ बनाओ और फिर कंडीशन सोचो. पहले हमेशा ग्राफ बनाओ फिर कंडीशन सोचो. ग्राफ बनाने से कंडीशन इजीली मिल जाती है. सो ग्राफ बनाओ, कंडीशन सोचो. चलो, दीज आर द कंडीशन. देखो ये 0, सो डिस्क्रिमिनेंट टू ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि दो पॉइंट पे काटना पड़ेगा. दिस विल बी लेस देन 0, बट एफ ऑफ 0 ये पॉइंट पे देखो वो तो अभी भी ऊपर है. सिंपल. ग्राफ बनाओ, कंडीशन. कंडीशन किस पे यूज करनी है? तीन. डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, या फिर सम ऑफ द रूट्स बोलो, एंड द फंक्शनल वैल्यू. चलो, अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 होने वाला है. इक्वल टू नहीं हो सकता, टच किया तो एक ही रूट मिलेगा ना. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये टाइम लोगों ने क्या यूज किया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी लेस देन 0 एंड द फंक्शनल वैल्यू 0 पे लेस देन 0. देखो नीचे है. गॉट इट? केस 3. अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला. आई एम जस्ट गोना डू द स्लाइड्स और नेक्स्ट स्लाइड करूंगा. यू जस्ट लुक एंड अंडरस्टैंड. अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द केसेस, प्लीज यू कैन आस्क मी हियर एंड नाउ, सो विल कंफर्म योर डाउट्स. चलो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. एक के वैल्यू दिया है और दोनों रूट उससे ज्यादा है. एक नंबर के. नेक्स्ट केस लेस देन के. एक बार ग्रेटर देन के हुआ, एक बार लेस देन. So these are basic constraints. चलो, got it. Next, k lies between. दोनों रूट के बीच में है k. सेवेंथ. ये इंटरवल के बीच में एक रूट है, तो या तो अल्फा हो सकता है या तो बीटा. ऐसे दो केस बनेंगे. प्लीज लुक एट द ग्राफ्स फर्स्ट. इमेजिन कि ग्राफ कैसे दिखेंगे एंड देन गेट टू द कंडीशंस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस. यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक अलग कंडीशन यूज किया, ये वाली. फंक्शनल वैल्यू यूज नहीं किया है, फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट यूज किया है. एट. ये बोथ रूट्स लाइंग इन द इंटरवल. पहले लास्ट में क्या था? एक रूट. अभी दोनों रूट इसके बीच में. तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. k1 और k2 दोनों पे फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. और द सम ऑफ द रूट्स k1 k2 के बीच में. एंड द लास्ट केस k लाइज बिटवीन द रूट्स. k रूट्स के बीच में है.
Got it? अभी as I told you कि there may be some extra cases, but we now know the logic कि ग्राफ बनाओ, कंडीशन बनाओ, वो कंस्ट्रेंट में ग्राफ की कंडीशन सेटिस्फाई करा दो. Got it? 1 minute I'll give you. Till then, you also drink some water. I'll also drink some water. Okay? Okay, we are back. So let's look at the questions. Yes, this is the first one. पहले क्या करना है, ग्राफ बनाओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ इट हैव पॉजिटिव रूट्स. ये तो पहला ही कंडीशन है ना. पहला कंडीशन डू रिमेंबर दिस वन, पॉजिटिव रूट्स. कंडीशन देखो मत. Let's make the graph and make the conditions on our own. So what are the possible graphs? ये वाला दोनों रूट्स पॉजिटिव, या तो ये वाला. सो कंडीशन किस पे होती है? डिस्क्रिमिनेंट sum of the roots functional value. So discriminant will be greater than equals to 0. First, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. b square 4 into a minus 1 the whole square minus 4ac, so 2a plus 1 will be greater than equals to 0. 4 and 4 will get cancelled. Let's open the bracket. So a square minus 2a plus 1 minus 2a minus 1 greater than equals to 0. So a square minus 4a greater than equals to 0. 1 to cancel. A into a minus 4 greater than equals to 0. So what are the roots? 0 and 4. ये वाला चाहिए ना, प्लस प्लस. So a belongs to minus infinity to 0 union 4 to infinity. ये फर्स्ट कंडीशन से आया. अभी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स क्या है? ग्रेटर देन 0. सो माइनस बी बाय ए. सम इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस बी बाय ए, तो 2 into a minus 1. a तो 1 है, ग्रेटर देन 0. 2 तो गया, a is greater than 1. The third condition, which is functional value at 0. So f of 0 is greater than 0. So f of 0 ये है ना, this is f of x. So f of 0, 0, 0, क्या मिला? 2a plus 1 greater than 0. So a is greater than minus 1 by 2. Now important, ये ग्राफ को पॉजिटिव रूट्स होने के लिए कंडीशन 1, 2 and 3 तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री. 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ना कि यूनियन. यूनियन नहीं लेना है, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन. बेस्ट वे टू टेक इंटरसेक्शन, नंबर लाइन बना लो. एक तो 0, चलो माइनस हाफ, फिर वी हैव 0, फिर वी हैव हाफ, नहीं, फिर वी हैव 1. माइनस ऑफ 0, 1 और 4. चलो फर्स्ट कंडीशन से माइनस इंफिनिटी से 0, सॉलिड सर्कल 4 से इंफिनिटी. सेकेंड
1 से ग्रेटर और थर्ड -12 से ग्रेटर. So can you see the intersection? तीनों एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं? ये रीजन, बराबर ना? So that means my final answer is A is greater than or equals to O. This is my answer. Simple. कंडीशन यूज करो, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लो एंड आई गेट ए. इक्वल टू आएगा ना? या चलो, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक एंड राइट ऑफ द कंडीशन. कंडीशन लिखने के लिए पहले हमेशा प्लीज नोट ग्राफ बनाना पड़ेगा. मेक द ग्राफ एंड राइट द कंडीशन. आई गिव यू 1 minute. चलो 1 minute बहुत ज्यादा दे दिया मैंने, ठीक है, बट आई गिव यू 1 minute. चलो 1 minute दिया. कृति, ओके. Okay, done. 1 minute is up. So, my voice is audible. हाँ, चलो. So, has roots of opposite sign. So, what are the graphs possible? Opposite sign, ऐसा. एक रूट इधर, एक रूट इधर, एक ही ग्राफ है. ये वाला केस, if the roots have opposite sign, correct? So क्या conditions है? I hope you got this condition. Discriminant product is less than 0. Functional value is also less than 0. काफी है क्वेश्चन. So first is discriminant is greater than 0, equal to नहीं. Discriminant is b square a minus 10 the whole square minus 4 a minus 5 into a plus 10 is greater than 0. 4 we can cancel. A square minus 20a plus 100 minus a square plus 10a minus 5a, तो plus 5a minus 50 is greater than 0. So a square will get cancelled. I'll get minus 20a minus 5a minus 25a, 100 plus 50, 1 is greater than 0. So I can divide by minus 25. So a minus 25 5 121 6 minus 6 will be less than 0. इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से डिवाइड किया ना. So a is less than 6. The second condition, product of the roots is c by a. So a plus 10 upon a minus 5. Product of the roots will be एक positive एक negative, less than 0. Same, let's make wavy curve minus 10 और 5. Less than 0 चाहिए, मतलब ये वाला region, that means a belongs to minus 10 से 5. And what is the third condition? Third condition याद है? A मतलब leading coefficient into the functional value 0 पे. या तो ये possibility है या तो ये possibility. So leading coefficient positive, functional value 0 पे negative will be less than 0, right? So a minus 5 into functional value 0 0 a plus 10 is less than 0. So ये तो सेम ही आया ना, यहाँ से भी minus 10
<5 सेम ही है, तो इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं। सो लेट्स लुक एट द नंबर लाइन, -10, 5 और 6। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 6 से कम होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड 10 और 5 के 6, हाँ, बीच में होना चाहिए। सो what is the intersection part? This one. So that means final answer is A belongs to -10 to 5. This is my answer. Got it? Chal. Let's move on to the next question. Again, next question के पहले I'll give you 1 minute. You check out the conditions and tell me what are they. Both roots are greater than 2. First, make the graphs. Graphs पहले बनाओ और फिर conditions 3 चीजों पे, discriminant, sum of the roots और functional value. चलो, I'll give you 1 minute. चलो, डन. सो सी, इसका लीडिंग क्वेश्चन पहले से 1 है, मतलब पॉजिटिव ही है, तो खाली पॉजिटिव वाला ही देखना है. ग्रेटर देन 2. सो ये रहा 2, तो ग्राफ ऐसा होगा, या फिर ग्रेटर देन 2 बोला है, इक्वल टू 2 नहीं बोला है, ग्रेटर देन. ऐसा होगा तो ऐसा होगा. सो व्हाट इज द कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये भी चलेगा ना? दीज आर द रूट्स. ओके, सो बी स्क्वायर a square minus 4a is greater than equal to 0. So a into a minus 4 greater than equals to 0. So wavy curve 0, 4. ये वाला रीजन और ये वाला रीजन. सो a क्या मिला? a belongs to -infinity to 0 union 4 to infinity. Let's look at second. Second क्या था? Sum of the roots. So minus b by a. So minus of minus a will be greater than 2, है ना? वो तो 2 से बड़ा ही है. So a is greater than 2. The third condition, functional value. Third condition देखो, functional value f of 0 is greater than 0. f of 0 को तो a greater than 0. Now दोनों तीनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन. सो एक तो है, नेगेटिव में कोई नहीं है ना. 0 we have, 2 we have and 4 we have. So according to first, minus infinity से 0 और 4 से infinity. Second 2 से infinity. Third 0 से infinity. So you can easily see the common region. क्या है कॉमन रीजन? a is greater than or equals to 4. This is my answer. Simple. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, देन विल स्टॉप. लेस देन 1 ये तो कर लिया ना. हाँ, दिस वन. लेट्स डू दिस वन. चलो, अगेन आई विल गिव यू 1 minute. ग्राफ बनाओ फिर कंडीशन बनाओ. चलो, लेट्स गो. लेट्स गो.
आई होप अभी तक तो आपको पेस मिलना चाहिए। बना लिया ग्राफ? व्हाट इज द ग्राफ? चल, लेट्स सी। लाइज इन द इंटरवल। सी अगेन लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम लोग को यू शेप का ही ट्राई करना है। सो ये रहा 0, ये रहा 3। तो दोनों रूट 0 और 3 के बीच में है। तो या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा। करेक्ट। लाइज इन द इंटरवल 0 to 3 if both roots lies in the interval. Okay. So discriminant first condition will be greater than equals to 0. So b square minus 4 into 2 greater than equals to 0. That means a square is greater than equals to 8. तो अच्छा, a minus 4 into a plus 4 we can factorize ना, greater than equals to 0. 4 plus 4. This is the wavy curve. This region we are looking. So A belongs to minus infinity से minus 4 union 4 से infinity. Let's check the second condition. Second condition is sum of the roots is minus A by 1 will be also greater than 0. That means A is less than 0. And the functional value f of 0 is also greater than 0. f of 0 का तो 2 greater than 0 आया। इससे तो क्या ही मिलेगा, दिस इज ट्रू, यस ट्रू। सो दो ही कंडीशन मिली। लेट्स प्लॉट these conditions in the interval. In the interval का केस अपने को आया था ना, k lies between both roots lying in the interval. Yes, both roots lying in the interval ये, तो 0 और 3 पे both roots है। करेक्ट। सो डेल्टा तो ले लिया हम लोग ने। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई टू ए शुड बी के वन और के टू के बीच में, राइट। और दोनों ग्रेटर देन 0। अच्छा, वी मिस्ड वन कंडीशन क्या? हाँ, हियर वी डिड सम मिस्टेक। हाँ, माइनस बी बाई टू ए, माइनस ए बाई टू 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। So 0 less than minus a by 2 less than 3. हाँ. So 0 is less than minus a less than 6. So minus 6 less than a less than 0. And the third one is f of 0 should be greater than 0. So the mila 2 greater than 0. This is true. And f of 3 should also be greater than 0. So f of 3 रखा तो 9 plus 3a minus 2 greater than 0. So 9 minus 2 7. So 3a plus 7. So a is greater than minus 7 by 3. अभी बराबर है ना? 9 minus 2 7, 7 minus, yeah. चलो, let's look at the critical points. Minus 7 by 3 तो minus 4 से कम है ना? So minus 4 minus 7 by 3, oh minus 6 भी है अभी है। minus 6 minus 4 minus 7 by 3 minus 6 0 and 4. So एक तो है -4 से इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी। सेकंड इज -6 से
0 तक, and the third is -7/3 से ज्यादा. So as you can see, there is no possible value of A. That means A belongs to null set. Intersection ही नहीं हो रहा है. अगर intersection नहीं हो रहा है तो A belongs to null set. Got it? A belongs to nulls. Chalo. That's it for today. Let's meet in the next class, which is next Saturday. Bye bye, everyone. Take care.